Today we study complex number. Complex number हम देखेंगे. We have studied the linear equation in one variable and two variable and quadratic equation in one variable. Okay. We have seen that the equation x square plus 1 is equal to given has no real. 10th क्लास में हमने देखा है कि जब कभी भी ऐसा आया no real को बोल दिया गया. ठीक है. This means कि square of every real number non-negative we need to extend the real number system to larger system so that we can find the solution of this equation x square is equal to minus 1. In fact the main objective क्या हो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें ये लेस देन अगर 0 होता था तो हम बोल देते थे नो रियल ग्रुप. थोड़ी सी चर्चा इस पे आज हम करेंगे. बोला गया कि रियल नंबर्स बोल रहा है वी हैव टेक द अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई एज द मैथमेटिशियन यूलर हु गिव द सिंबल्स. ओके. तो यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट पे ये हैं हमारे अगर जी जिन्होंने ये इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया डिटेल में. थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अब हम जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. What is the definition of complex number? If a and b are the real number and I is the imaginary number, okay, then a plus ib is called complex number. This means the combination of real number and imaginary number, okay, is called complex number and it is denoted by z. किससे डिनोट करते हैं? Denoted by z. z plus a I b r. कहीं कहीं हम देख सकते हैं x plus I y. ओके. यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. डिनोट कैसे करते हैं? रियल नंबर को रियल पार्ट ऑफ z को a, यहाँ पर ये चीज हो गया. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को b. ओके. ये यहां पर हो गया. ये एक डिनोट करने का तरीका है. क्या है प्रॉब्लम? व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस? अगर हम इसका रियल पार्ट ऑफ दिस की बात करें तो ये थोड़ा सा ऐसे लिखने की जरूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल 113 प्लस 13.2 iota which means real part of z is equal to 130 and imaginary part of z 13.2. okay. next हम जानेंगे कि why are these are so important. क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि कहाँ यूज होता है तो हम यहाँ देखेंगे. so why do we study the complex number anyway? Believe or not, complex number have many applications. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिक वाले जान लें and quantum mechanics मेजर रोल. ओके. फिर आता है नंबर सिस्टम. व्हाट इज द नंबर सिस्टम? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर. व्हाई? बिकॉज ऑफ रियल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर. व्हेन y is equal to 0 then called real number and when x is equal to 0 then called imaginary number. Like if z is equal to a complex number दिया रखा है z is equal to a plus ib, sorry for that, x plus I z is equal to x plus I y. अगर हम यहां देख लें कि अगर x is equal to 0 कर देते हैं, x is equal to 0 तो z हमारे पास जो बचता है वो बचेगा I y. I का मतलब iota. This means iota. Okay. ये हो गया. If y is equal to 0 then we find z is equal to x. This means ये हो गया हमारा रियल. अब रियल नंबर में देखते हैं कितने नंबर होते हैं. रियल नंबर के दो टाइप्स हो जाते हैं. There are two types. Real numbers are rational number and irrational number. Rational number like p by q form 1 by 2, 3 by 4 is this. ठीक. Irrational number like under root 2, under root 3, under root 5. इनको हम बोलते हैं irrational number. ओके. इंटीजर -2, -1, 0, 1, 2, 3 is
like that integers. Okay, integers में भी दो नंबर्स जानते हैं, नॉन नेगेटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं? होल नंबर which start with 0, 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and natural number which start without 0, which means 1, 2, 3, 4 and dot dot. Okay, and next, power of iota. What is the power of iota? When imaginary unit iota is raised increasingly higher powers, the cyclic operation of the, remember this iota square is equal to, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा, यहाँ जानते हैं iota square हम जान चुके हैं कि ये क्या होता है, -1. ओके, रिपीटिंग पैटर्न कि i पावर 0, iota पावर 0 is equal to 1, iota पावर 1 is equal to iota, and iota square is equal to -1. Okay, if we calculate iota power 3, then iota power 3 we can multiply with iota square and iota also. What is the value of iota? Value of iota square is equal to -1. So -1 into iota and is equal to minus iota. So iota cube is equal to minus iota and so on. यहाँ पे कुछ पावर्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 हो गया, आयोटा के पावर 5 का वैल्यू i हो गया. ओके, we can still now next simplifying the power of iota. You need to remember the powers of iota form 1 to 4. मेनली अगर हम याद रखें तो 1 to 4 का ही याद रखेंगे, जिससे हमारे सारे काम बन जाते हैं. Why? Method first क्या? Divide the exponent by 4. If the remainder is 0, the answer is 1, which means iota power 0. If the remainder is 1, then iota is only iota. If the remainder is 2, then iota is square, which means -1. If the remainder is 3, the answer is minus iota. Okay, calculate to करते हैं. Second method, divide into exponent by 2. Okay, if the remainder is 0, iota power 2 के power n, which means -1 के power 1 is equal to 1. -1 is the best and even or odd. किस पे बेस्ड रहेगा? हम देखेंगे कि वो even है या odd है. Okay, यहाँ पे नोट्स में कुछ है. When rising to any positive integer power 2, answer is always iota -1 minus iota r, which means कि अगर हम iota के पावर्स के वैल्यू की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ हम देख लेते हैं कि केवल दो वैल्यू आते हैं, या फिर iota है या फिर -1 या फिर माइनस iota है या फिर 1. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि सिंप्लीफाई iota पावर 87. फर्स्ट मेथड के हिसाब से डिवाइड द पावर डिवाइड बाय 4, व्हिच मींस यहां हम लोग करके कैलकुलेट करके अपने हिसाब से देखते हैं. आयोटा पावर 87, पहले नंबर 87 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से. 4 2 जा 8 and 7 रिमाइंडर बचता है, 4 1 जा 4 and 3. If iota power 3, then we calculate iota 4 into 21 into iota power cube. Iota power 4 is equal to 1, so 1 power 21 into iota cube, and iota cube power minus iota, so overall value is equal to, so overall value 3. So overall value is equal to iota power 87 is equal to minus iota.
इनका देख लेते हैं व्हाट इज कैलकुलेशन. Divide the power of 4, find the remainder. Remainder is 3. The answer is 24 plus 3, which means iota power 4 power 21 and iota 2, which means minus 1. Method second, divide into power 2 and find the remainder. If we divide 87 divided by 2 is equal to 43, with the remainder is 3. Remainder also which is 3, which means minus 1. दोनों के आंसर सेम आए हैं. Next, simplify sigma k started from 1 to 30 and iota power k plus iota power k plus 1, which answer. First of all, we calculate iota power I power k plus iota power I k plus 1, which means sigma का मतलब होता है जो, which means iota started from k started from 1 to 30